And yes, the Prime Minister has left for the G7 summit, like Siddharth just told you, his first foreign engagement since being sworn in for the third time as Prime Minister. But the skies look anything but clear, at least for the time being, because there are plenty of storms that the BJP and the government have to continue to weather, whether from opponents or even from within the family fold. First, of course, is the opposition's tactic of shoot and scoot, which continues even now. It paid rich dividends when the BJP stood accused of trying to end the constitution, and now the Congress has come up with a fresh set of allegations. First, the Prime Minister's visit to G7 has been dubbed as an effort to salvage his diminished international image. Then there was a controversy created about how the PM has been put to the Margdarshak Mandal by the BJP along with Defence Minister Rajnath Singh. But then there were other troubles as well, from within, where the RSS questioned the BJP's tie-up with the NCP in Maharashtra and called it instrumental in reducing the brand value of the party. But first, let's tell you about the most bizarre controversy of the day, and one which created the maximum storm. It started in the morning with it being claimed that the PM and Rajnath Singh have been shifted to the Margdarshak Mandal. The Kerala Congress claimed that this is an indication that the floor test is going to fail, and what the website of the BJP shows is only a dry run of what will happen after the BJP fails the floor test. That is, that these two people, the Prime Minister and Rajnath Singh, will be shifted to the Margdarshak Mandal. By the way, Samajwadi Party leader IP Singh also echoed this claim. The reality, though, is quite different, because both of these gentlemen have been in the Margdarshak Mandal right from 2014. In fact, a press release to this effect was put out by the BJP on the 26th of August 2014 itself, and it says very clearly that the Margdarshak Mandal consists of the following people: Atal Bihari Vajpayee, Narendra Modi, L.K. Advani, Murli Manohar Joshi and Rajnath Singh. One wonders then if there was plenty of evidence. In fact, in 2014, anyone who was reporting at that time would remember very clearly that the number one argument given about how the Margdarshak Mandal is not some retirement home was the fact that the PM continues to be in it himself, that Rajnath Singh was in it himself. So then why was this controversy suddenly reignited today? Was it to stir the pot and keep BJP and its voters on edge? And that's what brings us to the question of the day. If this is the kind of tactic adopted by the opposition, and the questions that are being raised from within as well, from the RSS, a number of questions have been raised, are these signaling stormy times ahead for the BJP leadership? Let's take this across to the guests. Joining us now is Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, Ratan Sharda, author, Tushar Gupta, political analyst, Anand Dubey, spokesperson of the Shiv Sena UBT, and Kamruzaman Chaudhary, political analyst. I want to start by asking you first, Kamruzaman Chaudhary. Let's start with the most bizarre controversy of the day, like I said. What is the point of saying Prime Minister is in the Margdarshak Mandal? Mr. Modi has been in the Margdarshak Mandal since 2014. Yeah, Padma, in 2014 his name was on the waiting list. Slowly as it comes up, his waiting list has transferred into RSC, and now it is going to be confirmed within the next few months. So don't worry about it. Sir, here is the press release. It is literally, this makes me wonder whether this was done deliberately to try and create confusion, to try and create a narrative. Everyone is laughing about it now. But this was actually put out in 2014, and it says very, very clearly, Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri Narendra Bhai Modi, Shri Lal Krishna Advani, Shri Murli Manohar Joshi, Shri Rajnath Singh. And it comes on the 26th of August 2014. This was put up by the BJP on its own website. What was the point of this strange controversy? Indian National Congress, Kerala, spoke about it. A whole lot of handles, who are pro-Congress spoke about it. Why? Basically, this same thing I'm telling you, it's always a time over for Narendra Modi ji in 2024 itself.
almost he lost the election in Varanasi and he was about to be replaced by the RSS and the BJP. Even they were looking for the replacement of Narendra Modi ji prior to the elections also, that we all know. Whether BJP accepts it or not, they were looking for it. But anyhow, whatever the controversy is, that the fact remains that Narendra Modi ji is on his way out in the next few months, if not years. So the point of that, he being in the Margdarshan Mandali, I told you in 2014 he was there, 2019 also he was there, he was on a waiting list, he was into RAC in 2019, now his ticket into the Margdarshan Mandali is going to be confirmed by 2024 or 25, just wait and see, mark my words. Okay, I will, but before I let Sanju Verma respond to that very quickly, because I don't know when an alternative was being considered to Mr. Modi before the elections, who was it? What's the gossip you heard? Because I didn't hear anything, Kamruzaman Chaudhary. Who was this person going to replace Mr. Modi? बताइए कमरू जी, कौन था ये आदमी जो मोदी जी पे भारी पड़ रहा था चुनाव के पहले, उनको रिप्लेस करने वाला था? सॉरी आई थॉट नहीं, चुनाव में भारी का बात नहीं है. यू सी नाउ व्हाट हैपेंड अक्रॉस द स्टेट्स. दे हैव रिप्लेस्ड राजनाथ द मामा जी of Madhya Pradesh, they have replaced Rajasthan CM, they have replaced Uttarakhand CM, they have replaced many other dignitaries of the Bharatiya Janata Party's chief ministers across India, just because of the one reason that the position of Narendra Modi ji was in very big danger. If they did not want an alternative power centers coming up in the states. So there was always a gossip that there has to be a replacement of Narendra Modi ji, whatever be the dialogue that he wanted to project across the nation, but it was a fact. Okay, I take your word for it. Sanju Verma, the signals are all there that Mr. Modi eventually, aaj nahi to kal, will be made permanent member of Margdarshak Mandal. You know, I think amongst the many virtues that Congress party has, including Jairam Ramesh, who has an opinion on everything under the sun, one is crystal ball gazing. But I just want to tell Jairam Ramesh, who's the mouthpiece of Rahul Gandhi, that आपने तो ये कहा था कि कांग्रेस alone 295 सीट्स जीतेगी. आपने तो ये भी कहा था हो ना हो, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे भारत के. आपको जनता ने झुठला दिया. Now you say, oh, this is not Modi 3.0, this is NDA 1.0. Whether it is Modi 3.0 or NDA 1.0 is not material. Who is the Prime Minister? Narendra Modi. By far, is he still the most popular leader globally with an average rating of 78%? Yes, indeed. If you are saying that the BJP's tally has fallen to 33 in Uttar Pradesh and BJP needs to worry, I said yes, Uttar Pradesh में जो हुआ, उस पर आत्मचिंतन करना जरूरी है. I'm not going to say no, we are very happy कि हमको 33 सीटें मिली हैं. I'm not going to say that. But if you're going to blame Narendra Modi for the tally in Uttar Pradesh, you give credit to Narendra Modi for the brute majority in Odisha. You give Narendra Modi credit for the brute majority in Arunachal Pradesh. You give Narendra Modi credit for the brute majority in Madhya Pradesh. You give Narendra Modi credit for the brute majority in Chhattisgarh and Rajasthan. You give Narendra Modi credit for the fact that we have an NDA government in Andhra Pradesh. You give Narendra Modi credit for the fact that we have an NDA government in Sikkim. वो आपसे होगा नहीं. मतलब, you want to have your cake and eat it too. ऐसा नहीं चलता. But most importantly, I just want to say this. Jairam Ramesh today has tweeted that going to attend the G7 summit in Italy is an attempt by Narendra Modi to divert and digress and to basically bolster his target image. So I want to tell Jairam Ramesh one thing, Padmaja, that G7 summit to be fair, he said diminished image. G7 summit पर नरेंद्र मोदी जाएंगे, ये बहुत पहले से तय था. Such events, the protocol is decided months in advance. And I also want to make one very important point. Okay. To say that Manmohan Singh actually is the harbinger of the voice of Global South way back in 2008, that is a whole lot of hogwash. Because after talking about Global South in 2008, the Congress did nothing till 2014. Okay. The voice of Global South became defunct. Today, by adding the African nations to G20 and making it G21, the voice of Global South
is loud, alive and kicking. Okay, let's address this one by one. First, you are saying that all of these are falsehoods, but in a manner of speaking, and I want to bring in Ratan Sharda and Tushar Gupta on this. Tushar Gupta, you first. Fair to say he is in the Margdarshak Mandal. Maybe, maybe nahi, it is factually incorrect. He's been there since 2014. But in a manner of speaking, the Congress is saying, look, now Mr. Modi is being questioned, not just by the opposition, but even people within. Look at where we stand today. We stand in a place where you've got Sangeet Som, an MLA of the BJP, questioning Sanjeev Balyan, a former MP of the BJP. You have got people within the RSS questioning the wisdom of some of the decisions taken by the BJP. So here is a Prime Minister whose decisions are being questioned. And he is in troubled waters. Good evening, Padmaja. I think the Congress is so happy that their seats have increased from 50 odd to 98 that they forgot to read. They cannot read the date on the press release which says 26th August 2014, and almost 10 years later they are running a fake narrative where they say that the Prime Minister has been moved to the Margdarshak Mandal. Perhaps this is a habit they have taken from the recent general election where they were distributing guarantee cards on the ground and telling people that if we come to power, you'll get rupees 8,500 a month. Nevertheless, for those who are asking the Prime Minister to move to the Margdarshak Mandal or ridiculing him, have forgotten that between 2004 and 14, the government was being run by NAC, who was the chairperson of the National Advisory Council. A family member of the Gandhis who did not want any responsibility, any accountability, had no credibility but wanted to have the shots when the government was formed. Today, the CWC passed a resolution almost a week ago urging Rahul Gandhi to be the leader of the opposition, but he's not answered it yet. So this Margdarshak habit, it's that of the one family which the Congress represents all the time, especially Mr. Kamruzaman Chaudhary hai. Now, Padmaja, let's come to numbers because Congress wants to engage us in fake narratives. Congress believes that they have secured somewhat of a victory and the Prime Minister is on weak footing. Can someone on the panel tell me when was the last time Congress touched 240 seats? It was 40 years ago in 1984. Okay. 6 elections have been fought under the leadership of the Gandhis. Not once they have crossed 206 seats. The Gandhis alone have not crossed simple majority even once, Padmaja. And they accuse the Prime Minister of being on weak footing. One interesting point, Padmaja. Yesterday, Rahul Gandhi, I think it was in Amethi, where he was mocking the BJP saying that dekhe Ram Mandir banaya, Ayodhya mein to vote nahi mila. Congress has registered a unique distinction in the general election history of Uttar Pradesh. The distinction is that no party, be it the Samajwadi, be it the BSP, be it the BJP, has had 3 general elections where the vote share has been less than 10%. On the contrary, BJP is the first party in the general election history of Uttar Pradesh to have a vote share of more than 40% in 3 consecutive elections. Here's the truth of the fact, Padmaja. The Congress has failed for the 3rd time against the Prime Minister. The Gandhis have failed yet again to get more than 272 seats, and yet they want to raise allegations against the Prime Minister. My question, Padmaja, when was the last time Congress got a majority government? It was 1984, and we know what the dynamics were in 1984 election. Okay, let me bring in अनुराग भदौरिया of the समाजवादी पार्टी. अनुराग भदौरिया, प्रधानमंत्री कहीं नहीं जा रहे मार्गदर्शक मंडल में, उनकी सरकार है. एंड टू सजेस्ट अदरवाइज वुड बी मुंगेरी लाल के हसीन सपने. कोई नहीं जा रहा मार्गदर्शक मंडल में. अच्छा पद्मजा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. एक कमाल की आजकल पत्रकारिता हो गई है और भारतीय जनता पार्टी, भाई ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार भारतीय जनता एनडीए गवर्नमेंट की सवाल किससे होता है? विपक्ष से. ये लास्ट 10 सालों में से विपक्ष से सवाल होगा. हम अगर कोई बात रेज करते हैं, समाज के किसी मुद्दों को हम उठाते हैं, तो सवाल का जवाब मुझसे ही पूछा जाएगा. भाई सवाल तो सत्ता पक्ष से होना चाहिए ना. अब तो आपकी 240 सीटें आई, क्यों कम सीटें आई? अनुराग जी, आप अभी जुड़े हैं. 8:01 पे शो शुरू हो गया था, तब से संजू वर्मा से ही सवाल पूछ रही हूँ. आपको टेप भेज दूंगी उसका. अब आप जुड़े हैं तो आपसे पूछूंगी. बात होने दीजिए ना. आप नहीं चाहते तो नहीं पूछूंगी. आपको सिर्फ एक खिड़की में काट के छोड़ देती हूँ. दिक्कत है ना, क्या आपके परेशानी होने लगती है ना आप लोगों को. सवाल है
कि आप लोग को इतनी परेशानी होती है, मैं तो जवाब दे रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता पे टोकिए ना, विपक्ष को क्यों टोकते? विपक्ष तो विपक्ष में है, सत्ता पक्ष से आपको जोरदारी सवाल पूछना है। विपक्ष तो आपके साथ खड़ा है, विपक्ष तो आपकी जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे उसके साथ विपक्ष जवाब तो दिखाई दीजिए, आप तो भाषण दे रहे हैं। बहुत मुबारक आपको, 37 सीटें आप जीत गए, बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से एक गुलदस्ता। जवाब तो दीजिए। अरे 37 सीटें इसलिए, हाँ तो बस अब आपका सवाल में जवाब आ गया। जनता ने जवाब क्यों दिया, 37 सीटें क्यों दी मुझे? क्योंकि हम जनता के मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है। बताइए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दे कौन से बड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग परेशान हैं यहाँ पे, जिस तरह का देखिए, अभी आज की बात कर रहा हूं, एक पुलिस डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन निकला था कि हम पुलिस डिपार्टमेंट भी भर्ती माने वहां कॉन्ट्रैक्ट पे करने जा रहे थे। फिर बाद में क्लैरिफिकेशन दिया नहीं कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हो रहा है, वो गलती से निकल गया। अब बताइए पुलिस में भी क्या टेम्परेरी भर्ती होंगे क्या? मैं आपसे पूछा था, अब आउटसोर्सिंग पुलिस में भी नहीं होगा ना, वो तो खत्म हो गया। अब मेरी बात का तो जवाब दे दीजिए प्लीज। मार्गदर्शक मंडल की बात कहां से आई? पद्मजा जी, कितना बड़ा मुद्दा है कि पुलिस सिस्टम में भी, एक मिनट रुकिए, 1 से 2 सेकंड दीजिए, 2 सेकंड दीजिए। कितना बड़ा मुद्दा है कि पुलिस सिस्टम में भी क्या आउटसोर्सिंग नहीं होगा? वो तो खुद बोल दिया उन्होंने। होंगे क्या प्राइवेसी लीक नहीं होगी क्या? सिक्योरिटी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगा क्या? तो तब हमने जब सवाल उठाया तब जाके डीजीपी साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया। तो ये तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना ऐसे सवाल पूछना। आपको उसके लिए भी बहुत मुबारक और एक और गुलदस्ता। बट अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे प्लीज, कश्मीर के अंदर में कि मार्गदर्शक मंडल की बात कहां से आई? प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, यही डिबेट होता रहेगा क्या? हिंदुस्तान में और कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी। चलिए ये डिबेट कर लेते हैं। अखिलेश जी ने करहल क्यों छोड़ दिया? हमला होता है, करहल क्यों छोड़ दिया? वो स्टेट की राजनीति छोड़ करके सेंटर में क्यों जा रहे हैं? समस्या खड़ी होगी है, यही डिबेट कर लीजिए। आपको समाजवादी पार्टी पे अगर डिबेट चाहिए तो रोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहां गए, विपक्ष ने क्या बोला, विपक्ष ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या किया, ये मुद्दा है। मजाक बना दिया आप लोगों ने हिंदुस्तान का, मजाक, लिटरली मजाक बना दिया है। जो मुद्दे उस पर चर्चा नहीं है। चलिए अनुराग जी, आपको अपनी 2 मिनट की ट्विटर की क्लिप मिल गई ना, अब आप इसको वायरल कर दीजिएगा। आपको एक और तीसरी बार मुबारक और एक तीसरा गुलदस्ता कि आपको अपनी ट्विटर की वायरल क्लिप मिल गई। अब आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो एक्चुअली लेट मी ब्रिंग इन रतन शारदा, बिकॉज जिन सवालों की आप बात कर रहे थे वो सवाल मैं पूछना चाहती थी रतन शारदा से। रतन शारदा, द रीजन व्हाई पीपल आर सेइंग that the Prime Minister is slowly being questioned, is being relegated, because a lot of decisions are being questioned, including by the RSS. We had the RSS chief, Mohan Bhagwat, talking about some very important things, about arrogance, about the whole idea of a Pradhan Sevak, about Manipur, and now you have spoken about the wisdom of a few alliances. Does that leave the BJP weakened? Hello, is it to me? Yes, that is to you. Go on, Mr. Ratan Sharda. I got disconnected, so I have not heard the last, diatribe of Mr. Bhadoria. But let me come to the basic issue that, see, how is the Congress behaving? Like a spoiled brat of very fawning parents. He scores pass marks after 20 years of efforts. And then these people feel that he has done something wonderful, and they end up prancing around like some weathercock or somebody. This cockiness comes from very stupid ignorance that you have just had a pass mark, you never reached the majority, you never reached a good number, and despite that, the kind of ridicule they heap on Mr. Modi is surprising. See, people expected opposition to behave better when they got better numbers. That okay, we'll have a better opposition, they have a voice, and we'll get a better Lok Sabha. But the way they are behaving is horrendous. Did Modi ji call G7 summit? He's a guest there. So somebody called a summit. Was it summit by the BJP or Modi ji? No, it's a world conference. I have never seen this kind of discontent creation by an opposition party overseas against the government. This is Modi head going to the very extreme. And when Modi ji has done some of the most wonderful work in foreign policy, which everybody in the globe accepts, people across the globe accept, these people are ridiculing his foreign policy also. And in this stormy times, this is the way to behave. He talked of Margdarshan Mandal. Sorry, Modi ji is Margdarshak, not Margdarshan Mandal. And
Should they not exchange notes with each other? What kind of job they are doing? 2014, they said Modi is nowhere. It was a failed project. From 2002, they said Modi has no place in politics. They lost year after year. When you cannot confront a great leader with falsehood, see, what are they talking about? They won these seats based on artificial intelligence, fake news, deep fakes. They have no shame. No, but hold on a second. Everything else is fine. No, but they haven't won the seats based only on artificial intelligence. You yourself have written that there are very, very real issues which were there in the BJP's campaign, and that has also helped the opposition win. The candidate selection, the netas who were unreachable, there were unnecessary politicking, the tie-up with the NCP in Maharashtra, which has hurt the brand of the BJP itself. Those were also very real issues, and that is what the opposition is raising today, Ratan Sharda. See, point is, after so all the false narrative, BJP lost nearly 7% of SC/ST votes. It lost all the Muslim votes, and this huge polarization of Muslim unity and Hindu division is the major cause. I've said all across. I've said it even in my article. So don't pick choosy material, and as a parivar ideology family, we would like to point out certain shortfalls. Does that mean that they have right to ridicule the party which has won the term third time? I'm sorry, that's not the way. There can be multiple reasons. Biggest reason, you just go to field and ask anybody, is the fake news and division politics. Do you want to carry on with that? Do you want to create a situation where artificial intelligence will be used to influence people, divide people, and create dissatisfaction? Okay, respond. अनुराग भदौरिया. अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स थी, हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं, बट टू से कि मोदी जी खत्म हो गए हैं इज कंप्लीटली अनफेयर एंड नॉट ट्रू, अनट्रू. अनुराग भदौरिया. देखिए, मुझे लगता है पद्मजा जी, इस देश के अंदर में एक नैरेटिव सेट किया जाता है. नैरेटिव क्या सेट किया जाता है? किसी न किसी वजह से प्रधानमंत्री जी के ऊपर में बात होती रहे, उनके नाम का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी का टीवी पे चलता रहे. ये एक कुछ दिनों से आम जनता का कोई बात ना हो पाए, आम जनता की कोई परेशानी की चर्चा ना हो पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी पे दिन रात चर्चा हो जाए, एक कहीं ना कहीं से लाइन उठाई जाती है, इस पे चर्चा बनी रहे. ये ठीक नहीं है पद्मजा, देश के लिए ठीक नहीं है. इस देश के अंदर में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है जो समस्याओं से जूझती है. चलिए आप बताइए किस चीज पे चर्चा होनी चाहिए. अनुराग जी आप बताइए किस चीज पे चर्चा होनी चाहिए. नहीं, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए. अब सुन लीजिए, होनी चाहिए. क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस की सिस्टम में जिस तरह से बोला कि आउटसोर्सिंग यहाँ पे लाया जाएगा, आप बताइए क्या पुलिस सिस्टम मैं आपको अभी बता रही हूँ कि वो फैसला वापस ले लिया गया है. आप कह रहे हैं उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? जो फैसला वापस ले लिया गया उस पर क्या चर्चा कर लूं मैं? तो अरे अभी विपक्ष, सुनिए मेरी बात सुनिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं. इस पे चर्चा होनी चाहिए थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ. ये बहुत बड़ा गंभीर मामला था, इस पे बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए. पुलिस सिस्टम में सिक्योरिटी के एक समस्या, क्या आप सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स करना चाहते थे कि क्या, किस वजह से आप लाना चाहते थे? इस पे चर्चा होनी चाहिए. बहुत बड़ा मामला था, लेकिन इस पे कोई बात नहीं हो रही है. बात किस पे हो रही है बताइए आप? वही बात हो रही है जिस बात को आप उठा रहे हैं. अगर आईपी सिंह ने नहीं बोला होता कि मोदी जी जा रहे हैं मार्गदर्शक मंडल पे, तो उस पर बात नहीं होती. अगर उनको वो बात करनी है, अगर वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए वो क्यों इस नैरेटिव में फंस रहे हैं. एनीवे, कमरुज़्ज़मान चौधरी, डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, टू द एक्चुअल क्वेश्चन, और वील कीप गोइंग राउंड इन सर्कल्स? Yes, of course. Of course. Yeah. Basically, the point out here is that you have got number of issues in the country with which Bharatiya Janata Party went to the elections under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. There were a lot of issues like the jobless growth, unabated price rise, crony capitalism, unilateralism. All of that we had highlighted in front of the voters, and the voters have given a fractured mandate with a reduced majority to the Bharatiya Janata Party. They lost around 60 to 70 seats. Now, questioning the intellect of the voters is itself a sacrilege in the eyes of the Constitution. And I believe Ratan Sharda ji must apologize to the voters of the country by hinting that the AI is responsible for the BJP's reduced performance. Point number one. Point number two that I want to highlight out here. The basic point that Narendra Modi is in the Margdarshak Mandali is nothing to be afraid of.
One day or the other, he is going to retire. There is no doubt about it. Whether it is coming 2029, whether it is coming 2025, that's a question that we need to debate out here. But by continuing with the same ministries, same ministers in the portfolio, he has said that I will run the government as I wish, as a dictator I will run the government. I will not see any changes. Whatever messages the voter have given in this election, I will never pay heed to this. So it's time actually for Narendra Modi to go ahead into the Margdarshak Mandal out there. That's the limited point I want to prove out Before here. Ratan Sharda responds, Sanju Verma wants to come in. Sanju Verma. Thank you. Padmaja, if you notice, I have been on your debates after the 4th of June. I have been pointedly asked questions about the BJP's debacle in Uttar Pradesh. I don't think me or any BJP official spokesperson has said, नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गलती नहीं है, ईवीएम की गलती है, ईवीएम को दोष दो. We are people who introspect both in case of defeat and in case of a victory. We do not find a scapegoat like the EVM or the Election Commission कि बोले नहीं भाई, Election Commission अपना काम नहीं कर रही, EVM तो manipulate हो जाते हैं जब बीजेपी हार जाती है. We are not sore losers like you people. But let me give you the more important data. Taking off from what Tushar Gupta said, he made a very interesting point, and I just want to add to one important data point here. समाजवादी पार्टी पिछले 3 लोकसभा इलेक्शंस में, लोकसभा 2014, 2019 एंड 2024 मिलाकर दी टोटल इज 45 सीट्स. कांग्रेस पिछले 3 जनरल इलेक्शन मिला के उत्तर प्रदेश से लोकसभा में दी टैली इज अ ग्रैंड 9 सीट्स एंड द बीजेपी टैली from Uttar Pradesh alone in the last 3 Lok Sabha elections put together is 170 seats, 170. तो पहली बात तो ये बीजेपी आत्मचिंतन करेगी, उसकी आप चिंता मत करिए. बट लुक एट द डिस्पैरिटी नंबर्स. कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली. बीजेपी 170 सीटें पिछले 3 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस मात्र 9 सीटें और समाजवादी पार्टी 3 लोकसभा चुनावों में मिलकर भी आपकी कुल मिलाकर टैली ग्रैंड टोटल सिर्फ 45 है. The second and most important point, last time Congress won more than 230 seats, it was 232, was in 1991. कांग्रेस ने कोलिशन गवर्नमेंट चलाई 2004 में विद 145 सीट्स. कांग्रेस ने कोलिशन गवर्नमेंट चलाई 2009 में विद जस्ट 206 सीट्स. Why is it that the BJP cannot run a coalition government with just... No, you can run. But Sanju Verma, we have debated that ad nauseum. That's not the point today. Even if you were to ignore everything that the Congress, the Samajwadi Party, the Shiv Sena says, today the questions are being raised on the working of the party from within the family fold. Can you ignore what Mohan Bhagwat has said? He has raised questions about the handling of Manipur. If you have a Ratan Sharda who is saying things like the biggest grouse of any BJP or RSS worker and common citizen for years has been the difficulty or even impossibility of meeting the local MP or MLA, forget ministers. The tie-up with the NCP did nothing except reduce the brand of the BJP. These are questions which are being asked of you by your own people, not by Anurag Bhadoria or by Kamruzaman Chaudhary. With no offense to Mr. Sharda, I'm sure if he's made some pertinent points, he's somebody who has a lot of ground connect in terms of the feedback that he receives from a cross section of BJP and RSS Karyakartas. So I will just say that his feedback, I'm sure, has reached the top brass. I'm sure the fact that we could not do a repeat of 2014 and 2019 in 2024, that is something that the party top management will introspect upon. मैं ये नहीं कहूंगी कि रतन शारदा जी ने जो कहा वो गलत है. हम इस पर जरूर ध्यान देंगे, आत्मचिंतन करेंगे. We are not like the समाजवादी पार्टी और the कांग्रेस. इसीलिए तो हम तीसरी बार सत्ता में हैं. इसीलिए तो मोदी 3.0 is a reality. Okay, आनंद दुबे, आत्मचिंतन किया जाएगा. ये एक बीजेपी और संघ परिवार है जहां आपस में ही वो एक दूसरे से बात करके दे रिजॉल्व इश्यूज. आई एम कमिंग टू यू मिस्टर शारदा. यस, आनंद दुबे. पद्मजा जी नमस्ते. नमस्ते. आपकी पूरी डिबेट एक मार्गदर्शन मंडल पर हो रही है. मार्गदर्शन मंडल कोई छोटी मोटी बात नहीं है.
आप उसके महत्वता को कम न कीजिए। मार्गदर्शन वही कर सकता है जो मार्ग दिखाता है, जो हमारा बुजुर्ग होता है, हमारा वरिष्ठ होता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सभी को मार्गदर्शन में जाना होता है। अगर आदरणीय मोदी जी आज नहीं कल, कल नहीं परसों मार्गदर्शन में जाएंगे तो हम समझते हैं कि इस पर किसी को चिंता होने का कोई कारण नहीं है, न पक्ष के लोगों को न विपक्ष के लोगों को। लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी और आदरणीय मोदी जी का ये जो चेहरा है, ये जो नाम है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने वेबसाइट पे डाला है। इसी से किसी को कोई हैरानी होने का कोई कारण नहीं है। एक बड़े हृदय होने के नाते हम विपक्ष में जरूर बैठे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज नहीं कल हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी को आईना कौन दिखा रहा है? उनके अपने सहयोगी, चाहे आरएसएस की मुखपत्र पत्रिका ऑर्गेनाइजर हो, चाहे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो और चाहे उनके सहयोगी राज ठाकरे हो, सब एक ही सुर में कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो जुमला साबित हुआ, ये हमको ले डूबा। और आरएसएस यही कह रही है कि जिस प्रकार आरएसएस ने इस बार मदद नहीं की या उन्होंने नहीं ली, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण बना। राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार पार्टियों को तोड़ा मरोड़ा गया, महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया। आरएसएस कह रही है कि अजीत दादा पवार को अपने साथ लेकर क्या हासिल किया आपने तो कमाने की जगह गवा दिया। तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम चुपचाप सब सुन रहे हैं। जो कह रहे हैं बीजेपी के सहयोगी कह रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं वो बीजेपी के लिए कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सचमुच आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि 240 पर क्यों रुक गए, क्या कारण था पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई। 10 साल आपके पास थे, इन 10 वर्षों में अगर महान कार्य किए होते तो 400 क्या 500 पार हो जाते। How magnanimous. Shivsena UBP not saying anything, just listening to everything. Ratan Sharda. To leave, just give me 1 minute. First of all, Kamru talked about jobless growth. Sanju Verma has given 100 times the figures of job employment created by BJP, which is more than any time by any government. Secondly, Kamru says I should apologize for my comment about voters. Why shouldn't he, apologize for spreading fake news, spreading hate, going to lane by lane, telling people कि आप लोग नीचे बैठेंगे, बीजेपी वाले ऊंचे जाते ऊपर बैठेंगे, आपको 8,500 आएगा, साइन करके दे दीजिए, and sending, distributing false affidavits or false, posters. Should they not apologize for fooling the people? As far as BJP is concerned, there was a committee called AK Antony Committee 2014. He's made certain statements that we look like, anti-Hindu party. We should not behave like anti-Hindu party, and all that. All those suggestions thrown into dustbin. After there was no revision, there was no discussion, there was no, view. How can they change? BJP has every time from 1950 onwards, whenever they have a problem, they go back to the drawing board, create new ideas, come with new idea, and come back much more stronger. Has Congress come back stronger since it lost power? Tell me where you have crossed 240, as Tushar has very rightly pointed out. And people who have been, getting votes in Thok, Shiv Sena UPT for the first time has won only because of wholesale transfer of Muslim votes to Shiv Sena, which is a joke. Because these people rose on the heritage of Balasaheb Thackeray, who was famous for outdated in 1993 to protect Hindus. So today you are using the vote transfer of Muslims to gain some seats, and you are telling people what BJP will do. Okay. BJP will find its own way every time. So let us not try to ridicule when you have been failure all through. Okay, Anurag Bhadoria. अगर बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया होता तो फिर तो उसको 400 पार कर देना चाहिए था। आप तो 400 पार का नारा देके 240 पे अटक गए। आपकी तो सरकार बनी नहीं, जनता ने आपको नकार दिया। अब जहां पे आप दम भरते थे उत्तर प्रदेश के अंदर में, वहां भी आप हार गए, महाराष्ट्र में भी आप हार गए, पश्चिम बंगाल में तो आपने पूरी ताकत लगाती, जनता ने आपको नकार दिया। तो हार मान लीजिए। और आपके सरसंचालक भी कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो घमंड होता है जिसको बोलते हैं, और जो हमारा झूठ है, मणिपुर है, इस पे तो उन्होंने भी उठाया है ना सवाल। तो ये तो आपको समझना चाहिए ना कि आपका संघ जो आपके साथ है, जो आपको हमेशा मदद करता है, वो खुद सवाल उठा रहे हैं कि मणिपुर के बारे में आपको चिंता करनी चाहिए और हम लोगों के अंदर में जो अहम है वो नहीं होना चाहिए। झूठ
किसके लिए बुलाया गया, तो आपको समझ में आता है ना। उसके बावजूद आप विपक्ष पे दोष दे रहे हैं। अरे विपक्ष तो हमेशा आपको ये बताता है कि आपने समाज के अंदर में पॉजिटिव राजनीति की होती तो आपने जिनको आज चिराग पासवान जी को अपने साथ लेकर आई, इन्हीं की तो पार्टी को आपने दो भाग में तोड़ दिया था। आपने आपके साथ शिवसेना जी थी, उसी की पार्टी को दो भागों में तोड़ने वाले आप हैं, एनसीपी को दो भाग में तोड़ने वाले हैं। तो आपने तो पार्टियां तोड़ी हैं, और जिन पार्टियों के साथ आप गठबंधन बना के बैठे हैं, तो मैंने पहले भी बोला, फिर मैं अपने एनडीए के साथियों से कह रहा हूं कि अपना स्पीकर बना लीजिए। अगर अपना स्पीकर नहीं बनाएंगे तो आपकी पार्टी भी तोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी में यकीन मत करो, इनको सत्ता से प्यार है, जनता से भी प्यार नहीं है, अपने एलआई को भी सपोर्ट नहीं करते। यही भारतीय जनता पार्टी है जो नीतीश जी के संजू वर्मा, बिफोर यू रिस्पॉन्ड, तुषार गुप्ता वांट्स टू मेक अ पॉइंट। आज सत्ता है तो उनके लिए। पद्मजा, एक तो 4 जून से पहले अनुराग भदौरिया जी का नारा होता था कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। शायद वो उसको भूल गए हैं। देखिए, बीजेपी हैज अ लॉट टू थिंक अबाउट, नीडलेस टू से दैट. But to say that everything is wrong with the BJP is also wrong. To say that somehow the party is disconnected from the ground reality is also wrong. Yes, they have suffered defeats in some of the states. They have some losses. But then they've also expanded in Andhra Pradesh, in Odisha. In Sikkim, they have won. In Arunachal, they have won. Last December, they won in Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh. So people who like to think that everything is wrong with the BJP is also incorrect. अब बात आती है आत्मचिंतन की। बिल्कुल भाजपा को करनी चाहिए, 240 सीटें हैं, पर क्या ये आत्मचिंतन की बातें ये उन पार्टियों से सुनेंगे? समाजवादी वाले कहते हैं कि तोड़ मरोड़ करते हैं। समाजवादी खुद तोड़ मरोड़ पर डिपेंड करती है, कभी कांग्रेस के साथ अलायंस, कभी बीएसपी के साथ अलायंस, कोई और ना मिला तो चलिए पोलराइजेशन वाला कार्ड खेल लिया। कांग्रेस के लोग कहते हैं पार्टी तोड़ी मरोड़ी। खुद ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में थे, पंजाब के उनके खिलाफ लड़ रहे थे, बंगाल में कहते थे अलायंस से, बंगाल में अलायंस बनी नहीं। तो when the Congress accuses BJP of somehow breaking parties or being unfair to alliances, I think they need to introspect first that why did their alliance did not work out, and number two, when will ever Rahul Gandhi able to manage 240 seats on his own before questioning the BJP for getting 240 seats? Okay, Sanju Verma, they are not criticizing you, they are giving you margdarshan, the opposition. You know, I will first counter what Anand Dubey said. You know, Anand Dubey उद्धव सेना से हैं, तो मैं इनको बता दूं, यहां बैठकर आप बीजेपी को जो इतना भाषण दे रहे हैं, बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं, दिस इज द टैली ऑफ उद्धव सेना. योर स्ट्राइक रेट इज 46% roughly. You won about 9 out of 21 seats. The Congress won 13 out of 17 seats in Maharashtra. NCP got 8 out of 10 seats, and Eknath Shinde group won 7 out of 15 seats. Eknath Shinde group strike rate is still better than Uddhav Sena's. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आप जब बैठकर यह कहते हैं कि बीजेपी तोड़ मरोड़ करती है, 2019 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में द मैंडेट वाज फॉर नरेंद्र मोदी एंड देवेंद्र फडणवीस. दैट इज व्हाई देवेंद्र फडणवीस लेड बीजेपी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गॉट 105 सीट्स. उद्धव सेना देन वन 56 सीट्स, 55 बाय द शरद पवार एनसीपी एंड 44 बाय द कांग्रेस. आप जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार के साथ जाकर उनकी गोदी में बैठ गए, अपनी आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन छोड़कर, आप चाहते हैं सब आपके लिए तालियां बजाएं. बट जब वही बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ अलायंस में सरकार बनाती है, तो आपके पेट में मरोड़ उठता है. अगेन आई विल से यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू. पॉइंट नंबर 2 एंड द मोर इंपॉर्टेंट वन टू अनुराग भदौरिया. अनुराग भदौरिया, मैंने तो पहले ही कहा कि यू वन 37 सीट्स, गुड लक टू यू, एंड वी आर अनहैप्पी दैट वी गॉट ओनली 33. But I would have congratulated you had you beaten the BJP strike rate of 91% in Lok Sabha 2014. We got 73 out of 80 seats. I would have congratulated you if you had beaten our 2019 Uttar Pradesh tally, which was 62 out of 80 seats, which was a strike rate of 78%. 43-44% स्ट्राइक रेट के साथ आप चाहते हैं कि हम आपका गुणगान करें. हमसे नहीं होगा, हम तो आत्मचिंतन करेंगे, बट आपको भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है. Why is it that after a 10 years so-called anti-incumbency, the opposition still could not get more than 234 seats? 20 parties put together still had a lower tally than the BJP standalone at 240. सबसे पहले तो आत्मचिंतन आप करिएगा. Okay, everyone do आत्मचिंतन. Nobody needs to do each other's gurgan. But at this point, yes, there are gains made by the opposition which cannot be discounted. And there are reverses that the BJP has failed for various factors, as not just the opposition, but even people within are outlining. Let's see where that takes the BJP. Definitely not in the Margdarshak Mandal, at least for now. Thanks, gentlemen. Sanju Verma, for joining me.